हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, बनिए मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू कह 2 कौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्राइवेसी से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके जाए इसे, कोई नहीं। वरना राजवीर से ध्यान रखना तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल जो है लीगल वो होएगा, इलीगल कुछ नहीं होगा। तू कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले A BJP leader, Shrikant Tyagi, was recently booked by the Noida police for allegedly abusing and later assaulting a woman who is said to be a co-resident of the leader. Shrikant Tyagi, who identifies himself on social media as a national executive member of the BJP's Kisan Morcha, allegedly manhandled the woman following a spat inside a housing society. The entire incident took place at the Grand Omax Society in Sector 93B in Noida, and the video of the same went viral on social media. The spat began when the woman objected to the plantation of some trees by Shrikant Tyagi, citing violation of rules, which the latter claimed that he had the rights to do so. The spat later turned ugly when Tyagi started abusing the woman and later pushed and assaulted her as well, all of which was caught on camera. Videos of the incident were shared multiple times on social media, with one purportedly showing Shrikant Tyagi hurling expletives and assaulting the woman. Tyagi also hurled abusive words for her husband and made derogatory remarks about her. At one point during the altercation, Tyagi is seen pushing the woman and shouting at her. According to the police, Tyagi has been booked under Section 354. Shrikant Tyagi has been booked under Indian Penal Code Section 354, assault or use of criminal force on any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty. Additional Deputy Commissioner of Police Ankita Sharma told news agency PTI. According to the reports, Tyagi had allegedly illegally occupied a portion of the park located in the society, which inconvenienced the other residents. He was served with a notice over the illegal occupancy of the park, but Shrikant allegedly refused to do so and tried to use his position to his advantage. The video shows the woman objecting to the same, post which Tyagi lost his cool. Meanwhile, a local BJP office bearer said that he is not associated with the Noida unit of the party and holds no post here. वो कह नहीं हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, बनिए मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू कह 2 कौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्राइवेसी से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके जाए इसे, कोई नहीं। वरना राजवीर से ध्यान रखना तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल जो है लीगल वो होएगा, इलीगल कुछ नहीं होगा। तू कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अपनी लैंग्वेज देख पहले। तुझे जान कल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज। हाँ शट अप। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है। सब इलीगल काम करने हैं तो जाके बेचा या वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। ओमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है, ओमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसे दिखा देंगे पूरे। हाँ तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। हाँ क्या? तो वही है ना, तेरे घर पे उस दिन आए थे। हाँ हाँ, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ जानता हूँ तेरी हैसियत। बस मुझे पता है तेरी हैसियत जानता हाँ, हूँ। मैं भी सबकी भाग के आई है, हमारी पूरी सोसाइटी जानती है, सब खड़ी भाग के है। आई है ना तू, वही है ना तू। भाग के आई ये भी पता है। तू ही भाग के आई है ना। हाँ पता और ही पता तेरे बारे में बहुत कुछ। बहुत अच्छी बात है। तेरे को 2-3 पीछे